Meanwhile, let's focus on the case. We've spoken to the victim's family. Maushmi Singh is in Hathras. She spoke to the victim's mother and aunt to say that they could not see their girl for one last time. 12-1 बजे तक चलता रहा, 2-2:30 बजे बज गए तो वो एक ऐसा है कि अपनी लड़की को मतलब वो कर दो, चलो सब लोग। तो हमने कि हम नहीं जा रहे, तो मैंने यहाँ हमारी बॉडी हमारी लड़की के यहाँ लेके आओ, कि यहाँ नहीं, वहीं आपको चलना पड़ेगा। तो मेरी नंद ये सब पहुँचे, सब लोग पहुँचे। जब शमशान घाट को बॉडी को लेके जा रहे थे, जब मेरे भाई वहीं खड़े कर रखे थे, वहाँ सारी चीजें इकट्ठी कर रखी थी, जलाने को लकड़ी सब कंडे सारी चीजें कफन है सब चीजें चरावे के लिए रख रखी थी। कट्टिया में तेल हो क्या हो हमें नहीं पता। जब हमको जब पता लगी कि बच्ची को भी लेके जा रहे हैं तो हम यहाँ से भाग के शमशान आधे पे पहुंच गए। तो आप लोग यहाँ से भागे? कितना दूर है शमशान? आधी रात को भागे आप? किसने बताया आपको? बच्चों ने बताया कि बुआ जी वो शमशान घाट दीदी को लेके चले गए। मैंने ऐसे कैसे लेके चले गए? हमारे प्यारे प्रेमी परिवारी सब लोग यहाँ बैठे हैं बच्ची को मुंह देखने के लिए। आप ऐसे कैसे क्या कर रही हो? ये कम से कम डेड बॉडी आती है तो घर पे आती है, घर से विदाई करते हैं बच्ची को, सबकी करते हैं। हमारे जो हिंदुस्तान में जो सबको, तो ऐसे ही करेंगे हम। तो आप लोग वहाँ पहुँचे? फिर हम पहुंच गए तो हमने अपनी बच्ची के लिए गाड़ी के सामने खड़े हो गए, लौट भी गए, झोली में भीख भी मांग रहे, हाथ भी जोड़ रहे, पैर भी पकड़ रहे, पर कोई किसी के तरह की कोई दया नहीं आई कि लोग क्या कर रहे हैं। ये पूरी लेडीज पुलिस ने और जेंट्सों ने फेंक दिया मुझे, 4-5 जनों ने। कई मेरी बहन फेंक दी, बुआ फेंक दी, भाभी फेंक दी, सब लोग फेंक दिए। जब एकदम से गाड़ी निकाली तो पान निकल गया। और उसके बाद मरघट में ले गए। हाँ, लगा दी चिता हमने। आप लोग देख पाए? आखिरी झलक देख पाए? नहीं, झलक देख पाए अपनी? नहीं, कुछ बच्ची को किसी। Shivendra is joining us this morning with more details on the story, and I want to focus on the action by the Yogi government on the website Justice for Hathras Victim. Shivendra, good morning. What is the evidence that the Yogi government has here to claim that there were, elements trying to spread communal tension, trying to spread violence through this website? See, good morning, Akshita. This is the fact that SIT and other agencies are probing this matter very seriously. And yesterday, CM Yogi Adityanath claimed that these are the people who don't want development in the state. That's why they are spreading rumor. And on the basis of that, he was aiming on different organizations which were involved in NTCA protest and other as well. So in the evening, probe agencies have finalized that there is one website which is Justice for Hathras, which is involved in spreading rumor against this whole incident of Hathras rape and murder case. So finally, a case has been registered and few people are detained for questioning, but investigation is still going on. But this is most shocking that some organizations, some people who were also involved in NTCA protest and other protests against the government. Government is claiming, police is claiming that they are involved in spreading such kind of rumor. They are posting a false statement given by UP CM Yogi Adityanath and also from the administration. And on the basis of that they are spreading rumor in the society regarding this Hathras rape case, especially. They have posted pictures, they have posted statement by the government and other leaders as well. And after when investigation started, this website is like now shut down, and who people are behind this website and spreading rumor are under scanner. But the fact is that investigating agencies have got some very crucial clue that people are involved in spreading rumor regarding this Hathras. They're suspecting a link of PFI, SDPI in this particular website. I will have to see if there's anything to prove that. Shivendra, thank you for joining us with those details. Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis, like and subscribe to the India Today YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.